Hello my friends, today we are going to discuss our chapter chemical kinetics. Okay, welcome to all of you to our channel Hidden Chemical Treasury. So आज आम आम प्लस टू सेकेंड इयर फिजिकल केमिस्ट्री फास्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स आलोचना करिया जाउछे। आजर वीडियो आम देखा जे आम टाइप्स ऑफ रिएक्शन आमर केते प्रकार अच्छे एंड नेक्स्ट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को काढ़ारे केमितिका हेल्प करे आ डिफरेंशियल रेट लो विषय आम आज डिस्कस करवा। ओके, सो नाउ लेट अस प्रोसीड। फर्स्ट थिंग है रिएक्शन टाइप्स। ओके, सो बेटा I am heading here types of reaction. Generally we have divided reaction into three types. One is fast reaction and another is moderate reaction and next is slow reaction. Okay, slow reaction. That means we have three types of reaction. One is fast reaction, second is moderate reaction, and the next one is slow reaction. So in case of fast reaction, बेटा क्वेश्चन आसे फास्ट रिएक्शन कौन फास्ट रिएक्शन ना गोटे एग्जांपल दौचे। दीपावली समय आम सब जो बाण फुटाओ सुन फुटका फुटाओ तो अन्य बाण फुटका भी फुटाओ। सो आम सुन फुटका फुटेला बेले पिला माने तमान सब कौन कर ना सुन फुटका धरिकी कांथ को छाड़ी दियो से फाटी जाए ना कि दैट मीन्स से जगह भी केमिकल रिएक्शन हुए और से जगह एक्सप्लोजन हुए। बेटा एटा होची फास्ट रिएक्शन गोटे एग्जांपल। दैट मीन्स कौन मत ए जगह कह तमें जे ये जो फास्ट रिएक्शन ए जगह है दैट मीन्स बाण फुटिला एक्सप्लोजन है से केते समय लगला। बेटा क्लियरली टेलिंग दैट टेक्स ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। दैट मीन्स सेटा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड समय रे रिएक्शन कंप्लीट हो गला। सो आबे ताको कहिबा कोन ना फास्ट रिएक्शन। दैट मीन्स फास्ट रिएक्शन कोन ना व्हिच कंप्लीट्स विदिन a fraction of second. Which completes within a fraction of second. So इटा कहार आलोचना सरेला within fast reaction आलोचना सरेला। आउ किछि example, suppose all ionic reactions are also fast reactions. Okay, ionic reaction, all ionic reactions are fast reactions. For example, suppose you have HNO3 and that will react with NaCl and will produce precipitation of HCl. Okay, so now बेटा ये भी गोटे आयनिक कंपाउंड, ये भी गोटे आयनिक कंपाउंड। सो ये माने aqueous फॉर्म रे रिएक्शन करेंगे आ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मध्य आयनिक इंटरेक्शन बा तमे फिजिक्स टर्म में कहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो से माने कौन करेंगे ना HCl कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। आउ ए रिएक्शन टा बहुत फास्ट हम जे रिजन कौन ना आयन गुड़िक aqueous मीडियम रे फ्री फॉर्म में अवेलेबल थांती। सो देन आलोचना करबा स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन कौन ना व्हिच टेक्स मंथ्स और इयर्स टू कंप्लीट। ये मास कि वर्ष समय नहीं जाए कंप्लीट होगापी ताको आम कह स्लो रिएक्शन। एग्जांपल है कौन ना रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल ऑफ a slow reaction. Okay, so then आम आउ कौन एग्जांपल नहीं पारिबा।
सपोज गोटे गछर पत्रटे कौलिला तापर बड़ है परिपक्व अवस्था को आसवा पर पत्रटा धीरे धीरे पुणी पचिगला तापर गछर झड़गला ना कि पत्र कौलिबाट आरंभ करके पत्र पचि जेबा पचिकी गछर झड़ी पड़ा पर्यंत हूँ गोटे स्लो प्रोसेस सेटा भी स्लो रिएक्शन आम आम एज को नहीं जावा आम बयस बढ़ला आम छोट पिला थे बड़ हेले वृद्धावस्था भी चली आसो सो आम बयसर वृद्धि भी हूँ स्लो रिएक्शन दैट मीन्स इट टेक्स मंथ्स और इयर्स टू कंप्लीट देन आमर सबुठ इम्पोर्टाट कैटेगरी है मॉडरेट रिएक्शन आम थ्रू आउट all over our chapter chemical kinetics we are going to discuss only about moderate reaction आम ना फास्ट रिएक्शन उपर आलोचना करबा ना स्लो रिएक्शन उपर आलोचना करबा आमर आलोचनार विषय वस्तु है मॉडरेट रिएक्शन कौन ना जो रिएक्शन फास्ट पीरियड टाइम पीरियड और स्लो रिएक्शन टाइम पीरियड मीडियम रे काम करें सी मॉडरेट रिएक्शन दैट मीन्स आम एमती बुझा चेष्टा करवा सपोज गोटे फास्ट रिएक्शन टे हो बम फुटुचे बाण फुटुचे तार रेट को आम कैलकुलेट करें ना गोटे स्लो रिएक्शन हो तार भी रेट को आम कैलकुलेट करें ना किंतु मॉडरेट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच रेट कैन बी कैलकुलेटेड दैट मीन्स से रिएक्शन 2 घंटार है कि 3 घंटार है केते समय नेला ताकू आमे बढ़िया से कैलकुलेट करी पारिबा ओके सो मॉडरेट रिएक्शन जदि एग्जांपल नेबी सपोज नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 molecule of hydrogen to give 2 molecule of ammonia beta this is a reversible reaction Haber's process applied here so I am not going to discuss on that side so I have making one direction of arrow here okay so now in this process this is a slow reaction because as you all know that there is 3 covalent bond in between 2 atoms of nitrogen to form nitrogen molecule and 1 covalent bond in between 2 atoms of hydrogen to form hydrogen molecule so here bond breaks in between hydrogen atoms and in between nitrogen atoms and in between hydrogen atoms and nitrogen hydrogen makes bonds okay so ए जगह रे बॉन्ड भांगे पुणी बॉन्ड जोड़े कि नुआ प्रोसेस रे माने बॉन्ड भांगे पुणी बॉन्ड जोड़े और नुआ प्रोडक्ट तैयारी हुए सो ए जगह रे बॉन्ड भांगिबा एवं बॉन्ड बनिबार काम होला दैट मीन्स इट आल्सो टेक सम टाइम ओके सो एटा एते भी टाइम नेनी जे मास मास वर्ष वर्ष लागि जिवो सेति पे हम एको स्लो रिएक्शन काटा करे रखिने ए रिएक्शन रेट को हम कैलकुलेट करि पारिबा ओके सो रिएक्शन केते समय नउछ वी कैन ऑब्जर्व दैट ओके सो नाउ सबुठु मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आम जगह जानिले कौन ना मॉडरेट रिएक्शन विषय रे ही आम चैप्टर आलोचना करवा ना कि फास्ट रिएक्शन ना कि स्लो रिएक्शन तो रिजन कौन ना आम फास्ट रिएक्शन केते टाइम पीरियड कंप्लीट होचे काढी परिबा नहीं स्लो रिएक्शन भी केते टाइम पीरियड कंप्लीट होचे आम काढी परिबा नहीं सो थ्रू आउट ऑल ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट मॉडरेट रिएक्शंस ओके सो नाउ बेटा एबे आम आलोचना करबा रेट विषय रे रेट केते प्रकार ओ कौन कौन ओके ओके सो लेट अस स्टार्ट जेमते कि मु इंट्रोडक्शन वीडियो रे तमान को कहि रखी थली जे काइनेटिक वाटा ग्रीक वर्ड काइनेसिस रो आसी और काइनेसिस रो अर्थ होची मूवमेंट सो बेसिकली कहिबा को गले केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर रे हम केमिकल रिएक्शन स्पीड और रेट विषय ही आलोचना करने को जाऊे ओके सो एबे आलोचना करबा रेट केते प्रकार जनरली वी हैव डिवाइडेड रेट इनटू 2 टाइप्स व्हाट आर दोज रेट one is average rate and next one is instantaneous rate ओके सो मन भर ए डाउट आसुथिबो जे एवरेज रेट कौन आउ इंस्टांटानियस रेट कौन बेटा गोटे छोटिया एग्जांपल दिए नौचे सपोज तमे
एटी गोटे टाउन है भुवनेश्वर पीबीएसआर आम कैपिटल एंड एटी सपोज पुरी ओके सो नाउ हियर इज स्मॉल टाउन पिपली ओके माय होम टाउन सो नाउ सपोज तुम भुवनेश्वर पुरी तुम बाइक रे ट्रैवल करुच ये डिस्टेंस तुम ट्रैवल कला 50 किलोमीटर सपोज एग्जैक्ट जानी ना सपोज तुम डिस्टेंस ट्रैवल कल 50 किलोमीटर एंड समय नेला 2 आवर्स समय नेला ओके सो एठी तुमर स्पीड जदि आम काढ़ा डेट मीन्स चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम आमर आंसर पलि आस 25 किलोमीटर पर आवर डेट मीन्स जदि आम स्पीड काढ़ा डेल एस बाई डेल टी बेटा डेल अर्थ हो चेंज ओके डेल एस अर्थ है चेंज इन डिस्टेंस एंड डेल टी अर्थ है चेंज इन टाइम सो डेल एस that means change in distance that means final distance minus initial distance and del t means final time minus initial time so we have 50 kilometers divided by 2 hours and we will get answer that 25 kilometers per hour बेटा मोर सिंपल ए जगह कहबार कथा कौन ना ए जगह आम जो स्पीडटा काढ़े आपको आम कह एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड ओके सो पुणी इंस्टांटेनियस स्पीड कौन मु दुईटा को कही सारे भर डिफरेन्स कौन बुझीपर सपोज तुम ये बैक आस एंड ये जगार तुम तुम बैक पचारे तुम फ्रेंड बसी तुम सांग तुमको पचारा जे अरे एबे बैक स्पीड केते अच्छी तुम कौन कल ना स्पीडोमीटर को अनैल तुम स्पीडोमीटर को अनैल आ तुम सांग को सांगे सांगे रिप्लाई देल बर्तमान गाड़ी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर सपोज सो ये जो स्पीडटा तुम पाइल 60 किलोमीटर पर आवर यही गोटा कहीं तुम हो इंस्टांटेनियस स्पीड ओके सो डिफरेंस कौन डिफरेंस है जिते बेले तुम पाखे गोटे टाइम पीरियड को लेकिन तुम स्पीड काढ़ से जगह कह एवरेज स्पीड दैट मीन्स तुम पाखे गोटे टाइम इनिशियल थी एंड टाइम फाइनाल थी एंड जिते बेले तुम गोटे पर्टिकुलर टाइम रे स्पीड काढ़ से जगह तुम तो कह इंस्टांट ऑफ टाइम स्पीड काढ़े से इंस्टांटेनियस स्पीड ओके बेटा इंस्टांटेनियस स्पीड ताले तुम बहुत जन मन मन मिसकनसेप्ट गोटे रही जाए जे कौन ना इंस्टांटेनियस स्पीड काढ़े डेल टी वैल्यू 0 हो एंड जदि डेल टी 0 हो डेल एस बाय डेल टी तो इनफिनिटी पलि आसला आम केमी कहवा 60 किलोमीटर पर आवर है इंस्टांटेनियस स्पीड बोली बहुत जन मन भर ये प्रकार चिंताधारा चली आसे बेटा कौन ना डेल टी नॉट एक्जाक्टली इक्वल विथ 0 डेट मीन सपोज तुम सांग कहला जे स्पीड केते तुम स्पीडोमीटर को अनैब पुणी ताको रिप्लाई दब से किसी सेकेंड लगी जाइए ओके सो तुम भी कह जदि किसी सेकेंड लगी जाऊँ कि गोटे मिनिट लगी जाऊँ कि ताको कहवा भितर तो टाइम डिफरेन्स आसला ताल आम नियरली इक्वल टू 0 बोली कहीं कहचे बेटा एपाई कहचे जे दुई घंटा समय आगे किसी सेकेंड तुलना योग्य नुहे ओके से आम नियरली इक्वल विथ 0 बोली कहचे तार अर्थ टाइम पीरियड को लेकिन जिते बेले चेंज कैलकुलेट करुवा से आम एवरेज स्पीड कहवा आ पर्टिकुलर इंस्टांट ऑफ टाइम रे काम करुले आम इंस्टांटेनियस स्पीड बोली कहवा बेटा ये फिजिक्स रो कथा आपको आम केमिस्ट्री अप्लाई करवा केमितिका ना जिते बेले केमिस्ट्री आम गोटे रिएक्शन को पर्टिकुलर पॉइंट रे तार रेट कैलकुलेट करवा पर्टिकुलर इंस्टांट ऑफ टाइम रे आम तार रेट कैलकुलेट करवा से कहवा आम इंस्टांटेनियस रेट एंड अलग समय माने जिते आम गोटे टाइम पीरियड को लेकिन रेट कैलकुलेट करुवा से आम कहवा एवरेज रेट ओके सो आपको नहीं आहरी किसी कथा अच्छे आम लेटर आलोचना करवा जिते आम डेल डी आपको नहीं किसी नुआ नुआ कथा आम पाइबा सो ताकू आज ए वीडियो रे आम आलोचना करहबनी टाइम पाइबनी सो आम नेक्स्ट आर पार्ट सेकेंड नेक्स्ट पार्ट रे ए विषय आलोचना करवा आर विषय ओके सो नाउ let us discuss about rate and concentration बेटा रेट एंड concentration इम्पोर्टेंस केमिकल रिएक्शन है बहुत बेसी ओके सो ताको आम आमर डेली लाइफ रो घटना सब कंपेयर करी चलवा
suppose you have a simple unimolecular reaction, A gives B. Okay, A gives B. बेटा ए जगह मुझे तुमको पचारि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट केते बहुत जन जानी नथियो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन कही रखुची सपोज ये जगह मुझे स्पेस बन नौ कहवाई व्हाट इज स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट suppose N2 plus 3H2 gives 2NH3. Okay, so here we have एठारे किछि लिखाई नहीं माने 1, that means here is 1, here is 3 and here is 2. एठी हम जो पाचो 1 2 3 से टाइप जो नंबर रिएक्टेंट नेम किंबा प्रोडक्ट नेम को लगिक रही ताको आम स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कहवा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कही रखुची जे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होची से नंबर जी कि रिएक्टेंट किंबा प्रोडक्ट रो एक्सटेंट विषय रे सूचना दिए दैट मीन्स कौन ना ए स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखिक मुझे कही पारिबी जे if 1 molecule of nitrogen reacts with 3 molecule of hydrogen then that gives 2 ammonia molecule. आउ मध्य मु एमते कहि पारिबी if 1 mole of nitrogen molecule reacts with 3 mole of hydrogen molecule then that will give 2 mole of ammonia molecule. So that means I think तमर आइडिया चली आसीथिबो बेटा आम एठारे गोटे सिंपल यूनिमोलेकुलर रिएक्शन नहींचे रिएक्टेंट ए गिव्स प्रोडक्ट बी सो आम जगार यही रिएक्शन रेट कैलकुलेट करवा रेट कैलकुलेट करिया पूर्व मो डेली लाइफ गोटे छोटिया उदाहरण टे तुमको दौची एंड तापर ताको आम आस रिलेट कर चलवा सपोज तुम खाई बसीच थाली रे खाद्य अच्छे तुम जितकी खाईपर से खाद्य अच्छे और तुमको भोक जोर है दैट मीन्स तुम पेटर बिल्कुल किसी खाद्य ना ओके सो जो समय आरंभ है टाइम सेट टी इज इक्वल टू 0 ओके सो इनिशियल टाइम रे थाली रे खाद्य थी पेटर खाद्य न एंड तापर समय आरंभ ही चलला तुम खाया आरंभ कल खाई चल धीरे धीरे कौन हम ना थाली रू खाद्य डिसअपियर हम तुम पेटर खाद्य आपियर हम ओके सबुठ इम्पोर्टाट लाइन एया जे थाली रू खाद्य डिसअपियर हम पेटर खाद्य आपियर हम दैट मीन्स ताको आम एथर अप्लाई करबा आम पाठ रे देखो एथर देखो ओके सो सपोज टी इज इक्वल टू 0 टाइम रे दैट मीन्स इनिशियल टाइम रे रिएक्टेंट ए स्मॉल ए अमाउंट अच्छी एंड बी किसी नथिबो इनिशियली बी रो अमाउंट होची 0 रिएक्शन स्टार्ट हैला जेते बेले रिएक्शन हे चलिबो ए रो परिमाण कमी चलिबो एंड बी रो परिमाण बढ़ी चलिबो ए डिसअपियर करिवो बी अपियर करिवो ए रो कंजप्शन हबो बी रो फॉर्मेशन हबो सो सपोज एट अ टाइम t इज इक्वल टू t ए रु एक्स परिमाण रिएक्टेंट रिएक्शन कर सारी ए केते बड़ी की थी ना एक्स चलीगला तो बड़ी अच्छी ए माइनस एक्स लिसन 1 atom of A gives 1 molecule 1 atom of A gives 1 atom of B 1 mole atom of A gives 1 mole atom of B मो क्या देखिए कौचे ना स्टोइचोमेट्री देखिए कौचे जगह किसी लेखा ना जाइनि माना स्टोइचोमेट्री 1 ए जगह भी स्टोइचोमेट्री है 1 ओके सो ए रो 1 आटम बी रो 1 आटम दब आउ ए रो एक्स अमाउंट एक्सटेंट मत बी रो भी एक्स अमाउंट एक्सटेंट प्रोड्यूस करिवो ओके सो इनिशियली ए रो अमाउंट थिला स्मॉल ए फाइनली हैला ए माइनस एक्स इनिशियली बी रो अमाउंट थिला 0 एंड फाइनली बनेला x ओके बेटा मुझे साइड गोटे छोटिया कथा कही रखी जोटा कि आमको आगु कम आसो बेटा ए जगार ए चैप्टर रे आम जो कंसंट्रेशन कथा आलोचना करुचे से कौ कंसंट्रेशन दैट इज आवर मोलार कंसंट्रेशन ओके सो ताको आम ए रो दीपट साइड स्क्वायर ब्रैकेट लगे
चिन्हित करिबे आपको हम एक्टिव मास बोले भी कहि पारो ओके जो माने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़िथिबो भल से बुझि पारुथिबो सो ए जगह आम आपको कहवा कौन ना मोलार कंसंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम में बी लीटर और समथिंग सो मोल्स पर वॉल्यूम ओके सो ए जगह आम मोलार कंसंट्रेशन कहर आवश्यक कौन ना जो रिएक्टेंट रिएक्शन करुवे रिएक्टेंट गोटे कंटेनर भितर थे और से कंटेनर किसी वॉल्यूम थी सो we can tell that molar concentration means moles per volume okay so now हाँ आपको आम एथर अप्लाई करवा आगु को ए जगह रेट कौन हम तुम्हें खाइबार उदाहरण मुझे तुमको ठीक पूर्व देती तुम्हें खाई बसीच तुम सांग आसी तुमको क्वेश्चन कला अरे खेलिया को जाए तो खाइबा केत बेलू सर तुम्हें सांगे सांगे रिप्लाई दब जे मो थाली खाद्य सरीवाई जी समय लगे मत खाइबा से समय लगे किंबा तुम ताको आउ रिप्लाई दब जे मो पेट पूरीवाई जी समय लगे मत खाइबा से समय लगे दैट मीन्स कौन ना केमिकल रिएक्शन रेटा कहा डिपेंड कर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए ऊपर डिपेंड करिवो एंड रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी ऊपर डिपेंड करिवो दैट मीन्स रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन ओके मुझे रेट लगे दैट मीन्स मुझे केमिकल रिएक्शन रेट कथा कहूँ रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज इक्वल विथ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ reactant A and this also equal with rate of appearance of reactant of product B okay so rate of this chemical reaction is equal with rate of disappearance of reactant A and also equal with rate of so rate of this chemical reaction will be equal with rate of disappearance of reactant A and also this is equal with rate of appearance of product B बेटा आम जगह disappearance बदल आम वर्ड यूज करिपरिबा कंजप्शन एंड appearance बदल आम वर्ड यूज करिपरिबा फॉर्मेशन ओके जदि बहिरे कोठी कंजप्शन किंबा फॉर्मेशन लिखा है तो तुम जानि नब जे कंजप्शन अर्थ होची डिसअपियरेंस एंड फॉर्मेशन अर्थ होची appearance दैट मीन्स ए रिएक्टेंट ए कंज्यूम होची प्रोडक्ट बी फॉर्म होची ओके सो नाउ मु जदि जगह रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए काढ़ीदेवी ताहले रिएक्शन रेट मिल जाव जदि मु रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी काढ़ीदेवी ताहले भी रिएक्शन रेट मिल जाव ओके सो सपोज मु एथर आलोचना करी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए ओके शॉर्टकट लिखिली मो पाखे स्पेस कम अच्छे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए विल बी इक्वल विथ change in concentration of A divided by change in time. Change in concentration of A divided by change in time. So what will I get? So final concentration of A minus initial concentration of A divided by final time minus initial time sorry final time minus initial time okay final time minus initial time so what will be its answer finally air concentration है A minus x so A minus x minus initial concentration of A initial concentration है A so let then final time minus initial time है t minus initial time है 0 so what will be my answer that is a minus x minus a get cancelled by
t, and my answer will be minus x by t. Okay. Okay. So now one problem arises here, that is rate of disappearance. Rate cannot be negative. Okay, minus del by t cannot be negative. So now ଆମେ କ'ଣ କରିବା, listen, r o d rate of disappearance of a ର value କେତେ ନା, that is del a by del t, right? del a by del t. Okay, so ए जगह में देखले rate of disappearance of a केते ना minus x by t, and से rate of disappearance of a को मु केमिति symbolically present करि परिबी ना, del अथला मु कहि जारछि del means change ए त्रिभुजाकार चिन्हटी एटा का संगे समान ना del a square bracket भीतर a को रखिबा, that means molar concentration of a del a divided by del t. So जदि मु ए दुईटा इक्वेशन को इक्वेटिंग करी मु पाइबी रेट ऑफ del a by del t equal to minus x by t. This is what okay, this is what does it means? This means rate of disappearance of reactant a. Okay, this means rate of disappearance of reactant a, that means del a by del t equal to minus x by t. So now this implies, as we know that rate cannot be negative, एपटर भैल्यूटा नेगेटिव हो पारे ना, रेट कैनट बी नेगेटिव, आमको दीपट साइड माइनस मल्टीप्लाई करने पड़ो, आमको मिल del a by del t minus del a by del t equal to x by t. Okay, so what does this minus sign symbolically represent here? This negative sign represents that disappearance. Okay, एटा डिसअपियर करूची आ ताको ए नेगेटिव साइन ही सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूची. सो नाउ this totally means that rate of disappearance. Okay, got it? Rate of disappearance को हमें simple del a by del t लिखी परिबा नहीं, तार रीजन कोन, हम जे simple del a by del t लिखुचे ताल तार आंसर टा नेगेटिव रे पळे आछे, रेट रे वैल्यू टा नेगेटिव रे आछुचे. हमें जानि छे जे रेट रे वैल्यू नेगेटिव हे परिबा नहीं, तुम थोड़ी ना कहा को कुह जे मु -5 किलोमीटर स्पीड रे आसिले कि -50 किलोमीटर स्पीड रे साइकिल चलाउची, एटा तो केबे कहा को तुम कहि परिबो नहीं ना. सो नाउ रेट रे वैल्यू रे पॉजिटिव हबो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी पॉजिटिव हबो. सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को जदि आम एपरी वैल्यू द्वारा जदि सिंबॉलिकली आर द्वारा रिप्रेजेंट करबा ताले नेगेटिव वैल्यू पाउचे, सेति पय नेगेटिव एपटे मल्टीप्लाई करबा, एपटा एपटे भी नेगेटिव मल्टीप्लाई हेले एपटा वैल्यूटा मोर पॉजिटिव हे जिवो, एंड सिंबॉलिकली रेट ऑफ डिसअपियरेंस मोर केमिति का सिंबॉलिकली बोना माइनस del a by del t. एंड आई थिंक मैं थोड़े सिंपल रिवाइज कर दूचे, आइडिया चली आस बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. रिएक्टेंट ए गिव्स प्रोडक्ट बी एंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ए रिएक्टेंट स्मॉल a अमाउंट अच्छी, बी 0 अमाउंट प्रेजेंट अच्छी, एंड टी समय पर ए रो परिमाण हो गला कमे के माइनस ए माइनस एक्स, ए रो परिमाण कमे के हो गला ए माइनस एक्स, एंड बी रो परिमाण बने के हो गला एक्स. सो आम जाने रेट क्या संगे इक्वल हम ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल विथ रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी. सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या संगे इक्वल हम. सो आम जाने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या संगे इक्वल हम ना, change in molar concentration of A divided by change in time, that is del A by del T. एबे तापरे del A by del T रा वैल्यू जदि काढिबा, that means rate of disappearance रा जदि वैल्यू काढिबा, change in concentration of A divided by change in time, this is equal to final concentration of A minus initial concentration of A, and final time minus initial time, A minus x minus A, and T minus 0. So here we have a minus x minus a plus a minus a get cancelled, so we have minus x by t. So now on equating these two things, we have del a by del t is equal to minus x by t.
t. And as we know that del A here in this case del A by del t represents rate of disappearance. So rate of disappearance cannot be negative. So on make this side positive, we have to multiply negative sign on both the side. So here we have negative minus del A by del t is equal with plus x by t. Okay, so now here this thing represents rate of disappearance. So आम एतर कौन शिखिले ना आगो को जे कौन से रिएक्शन रे जदि रिएक्टेंट तो आम ग्यारंटेड जाने रिएक्टेंट माने ही से डिसअपियर करिवो. ओके, सो रिएक्टेंट जे तो डिसअपियर करिवो दैट मींस डिसअपियरेंस पई हमें नेगेटिव साइन को ही यूज करिबा. Okay, so here negative sign indicates that disappearance. Okay, so now ame agu ko alo. So as we know that rate of a reaction is also equal with the rate of appearance of product P. So now let us calculate rate of appearance of a product B. Okay, rate of appearance of a product B. So এটা কাহা সাথে ইকুয়াল হবো না চেঞ্জ ইন কনসেন্ট্রেশন অফ বি ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন টাইম. দ্যাট মিন্স চেঞ্জ পাই আমি সিম্বলিক্যাল নোট del b by del t. Okay, del b by del t. So now এতরা ভ্যালু কাঢ়িবা rate of appearance of b র ভ্যালু কত না del b by del t. That means this is equal to del b by del t. This also equal with change, but this means change in concentration of b divided by change in time. So now final concentration of b minus initial concentration of b divided by final time minus initial time. So here we have the final concentration of b is x. So x minus 0 divided by t minus 0. Here we get x by t. Okay, so as you know in my previous page we have get that minus del a by extremely sorry for this. Okay, square bracket chadi jaithile to seta hochi gote blunder. So minus del a by del t equal to x by t, and here we get that this. Okay, del b by del t equal to x by t. That means here we get del b by del t equal to x by t. So on combining these two equations we get that minus del a by del t equal with plus del b by del t. This also equal with rate of reaction. R or simple तमे rate बोली लिखी पारा बा small r द्वारा भी represent करे पारी. Okay, so now this is equal to rate of reaction. So ए जगह आमे गोटे जिनस शिखिले कौन ना डिसअपियरेंस पे नेगेटिव साइन नबा आउ appearance पे पॉजिटिव साइन नबा. दैट मींस रिएक्टेंट पे आमे नेगेटिव साइन यूज करिबा एंड प्रोडक्ट पे पॉजिटिव साइन यूज करि परिबा. बेटा केतेटा बही रे आको एमती भाबरे लिखा जाइतो मने कर जो माइनस del a by del t को एमती लिखा जाय परिबो dA by dt. Okay, so there is not a big mistake. So को जगह आमे तक आछि गोटे छोटिया डिफरेंस अछि जे कोठे आमे del यूज करबे कोठे d यूज करबे. एटा एवरेज रेट आ इंस्टेंटेनियस रेट रो कथा ताको आमे ता पय गोटे सेपरेट वीडियो बनाइबे नले कथारा बहुत क्लंजी हे जिवो. सो ठीक सेमिति का आमे del b by del t को db by dt बोली भी लिखि पारिबे. ओके, सो जदि को जगह del बदल रे d लिखा है सेम थिंग बोली धरि चलिबो. सो नाउ
suppose you have a chemical reaction like this. Okay, here capital A and a capital B is the name of the reactant which are going to react, and capital C and capital D is the name of the product which are going to be formed, and small a and small b are stoichiometric coefficients of A and B respectively, and small c and small d are stoichiometric coefficient of C and D respectively. So now what will be the rate here? Okay, so already I have told you that stoichiometric coefficients has a good importance, or has a very important part in calculation of rate of reaction. Okay, so now what will be the rate? R equal to, already I have told you that for reactant side we have to use negative sign. Here negative sign first, minus 1 by small a, बेटा जिते सब अच्छी आमर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से 1 by आकार चली आसीबो, काहे कि आसीबो सेटा तमर +2 सिलेबस भितरे नाही, +3 सिलेबस रो त मो सेति पय गोटे सेपरेट वीडियो मध्ये बनैबे. ओके, दैट विल बी ए सेपरेट वन. जदि तमे जानि चाहछ देखि जानि पारिबो, बट तम +2 सिलेबस रे नाही. सो दैट विल बी r इज इक्वल टू -1 by a. तमे डेल लिखिपार, डी भी लिखिपार. सो dA by dt इक्वल टू -1 by b, माइनस साइन रिएक्टेंट साइड जो अब इट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट b बोली मु आनली 1 by b, -1 by b dB by dt. ओके, सो नाउ दिस आल्सो इक्वल विथ +1 by c, प्लस साइन हैला प्रोडक्ट साइड जो 1 by c तार रिएक्टेंट आसलारी ए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल c इटी मान लेरी +1 by small c d c by dt. This also equal with +1 by d by dt. Okay, so now आमे आको रेट लॉ बोली कहि परिबा, बा स्पेशली डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ बोली कहि परिबा. ओके, डिफरेंशियल रेट लॉ बोली कहि परिबा. एबे आमे आर प्रत्येकटी पार्ट को चिन्हबा. So now already I have told you negative sign for reactant side, and जते सब stoichiometric coefficient 1 by a आकार रे पळे आसीबो. इति जके 2 थांदा इति आसा 1 by 2, 3 थिले 1 by 3, like this manner. So now बहुत समय पिला मिस्टेक करते कौन ना, सपोज गोटे रिएक्शन नहीं गो, सपोज गोटे रिएक्शन टे मुझे N2 + 3H2 gives product 2NH3. ओके, सो तुमको जगह कहला राइट द रेट लॉ फॉर इट. सो रेट विल बी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हियर. सो 1 by 1 लिखिबा नहीं, तार वैल्यू भी 1. सो -d by dt इक्वल विथ -1 by 3 dH2 by dt. This also equal with +1 by 2 dNH3 by dt. ओके, सपोज ए जगह मन करा जो एटार भैल्यू देदेला कि जेकोसी से गोटाकार भैल्यू देदेला तार रेस्पेक्टिव अन्य गुड़ाक भी काढ़ी पारिबा. केमिति काढ़ीबा ताकू नै कि मु किछि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को नै कि आगु को वीडियो बनैबे. ओके, सो नाउ सपोज इट इज सपोज तुमको पचारे जे व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन. व्हाट विल बी गोटे क्वेश्चन पचारे व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. ओके, जिते से पचारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तमे ए टोटल तार एटार वैल्यू काढ़ीबो नाही. तुमको दैट मीन्स मोर कहर कथा 1 by 2 dNH3 by dt र वैल्यू काढ़ी जदि अटकी गल ताले भूल करदेल. ओके,
दिस इज द एटा कहा संगे इक्वल एटा रेट ऑफ रिएक्शन संगे इक्वल यही जो वैल्यूटा जो तुम काढ़ी अटकी गल ताल तुम रेट ऑफ रिएक्शन काढ़ी अटकी गल ओके सी तुमको पचारि रेट ऑफ फॉर्मेशन बा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया पचारि दैट मीन्स तुम रेट ऑफ रिएक्शन काढ़ी अटकी जीवनी तुमको जगह कौन काढ़ियार अच्छी ना सिंपल DNH3 by dt काढ़ियार अच्छी with a positive sign okay so this is the rate of formation of ammonia not this okay so suppose तुमको पचारि था जे rate of disappearance of hydrogen okay rate of disappearance of hydrogen कौन पचार ना rate of disappearance of H2 okay so now जदि तुम यही पार्टा काढ़ माने -1/3 DH2 by dt काढ़ यहाँ कहाँ संगे इक्वल यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन संगे इक्वल दैट मीन्स तुम रेट ऑफ रिएक्शन काढ़ ROD काढ़ माने रेट ऑफ डिसअपियरेंस काढ़ माने तुमको सिंपल DH2 by dt with a negative sign that means negative DH2 by dt काढ़ियार अच्छी नेगेटिव साइन कहाँ ना जेहेतु डिसअपियर करुच्ची ओके हाँ तुम ये जगह 1/3 ये लगे काढ़ ना 1/3 लगे काढ़ले से रेट बाहरी गला बारंबार करके कहे मिस्टेक पिला बहुत करते तुम सिंपल -DH2 by dt काढ़ बेटा आम जमी कन्संट्रेशन को लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन काढ़ले से प्रेशर को लेकिन भी रेट ऑफ रिएक्शन काढ़ी पारिबा सो इन माय नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दैट एंड we will discuss about some more numerical questions okay so for today's session I am completing my video now okay so now thanks for watching and I request you so as you all know that this is my first time effort so now I hope some inspiration from you and so I request you to give your feedback to me that may be good or bad tell me both okay हाँ जहाँ भी तुमको भल लगे मत कह जहाँ भी भल लगुनि ता भी मत कह तुम मतामत मु मोर व्हाट्सएप नंबर एठार दे दूँगी 8249204250 824920 हाँ 4250 यहाँ मोर व्हाट्सएप नंबर तुम्हें व्हाट्सएप रे मते सेंड करि तुम मतामत एंड ऑल्सो तुम्हें हाँ समस्त को किसी होमवर्क भी दौचे मु टेक्निक कही सारी बहुत गुड़ाए निजे निज तरफ तुम पाखे बही थी बही काढ़ कि इंटरनेट क्वेश्चन काढ़ ओके सो क्वेश्चन काढ़ी से क्वेश्चन को गोटे पेपर सॉल्व करके मत तुम व्हाट्सएप रे भी पठे पार एंड मुझे आंसर तुम चेक करी एंड जार परफॉर्मेंस सब बेटर हो मोर नेक्स्ट वीडियो रे ओके ता नेम डिक्लेयर करी सो नाउ फॉर दिस सेशन आई एम कंप्लीटिंग दिस ओके सो जदि कहार डाउट रहा तुम तुम डाउट भी मत व्हाट्सएप रे पचार मो टाइम आवर समस्त दे दूँ दिन बेला 11टा AM रू 11:30 AM 11:30 AM भितर तुम यही नंबर रे मते कॉल करके तुम डाउट पचारि पार ओके 11 AM रू 11:30 AM रे मते यही नंबर रे कॉल करके डाउट पचारि पार नेक्स्ट थिंग है यहाँ मोर व्हाट्सएप नंबर फीडबैक सेंड करि पार एंड होमवर्क है तुम आउपरे वीडियो बना दैट मीन्स सॉरी क्वेश्चन करके तार फोटो उठा ओके फोटो उठे मत सेंड कर फोटो टे भल विजिबल होता दरकार आउ जे भल कर नेक्स्ट वीडियो मुझे ना कंप्लीट माने गारंटी नेबी ओके सो नाउ थैंक यू फॉर टुडे सेशन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड आई होप दैट you are doing your responsibility very well okay so thank you